Good evening, everyone. My name is Anak Sharma, and I am from BBA Batch HR, and my SAP ID is 5000934667. The general problem that I have identified in my neighborhood was of electricity. So here are some interviews which I have taken from the people who face problems due to electricity. हमारे एरिया में आपको बिजली को लेके क्या समस्या है? अब बिजली को लेके ये है कि रात में चली जाती है और फिर आती भी नहीं है सुबह तक। गर्मी में सोना पड़ता है, छत वत पे चारपाई डालनी पड़ जाती है। ये सब तो चलिए ठीक है, गर्मी का चलो, आज तो बारिश हो गई। पर बिजली की दिक्कतें बहुत है कानपुर में। यहाँ ट्रांसफार्मर कभी फूक जाएगा, वो सही भी नहीं करेंगे आके, फिर पता चला फ़ोन ही कर रहे हो तो कैसा वालों को बिजी जा रहा है फ़ोन, वो लोग फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। तो समस्या काफ़ी है, इसका हल निकालना चाहिए सरकार को। धन्यवाद। थैंक यू। बिजली से कानपुर में क्या क्या समस्या है? बिजली से क्या है कि हम लोग हैप्चुअल हो गए लाइट के। लाइट चली जाती है, बड़ी परेशानी होती है, एसी नहीं चलता, गर्मी लगती है, पंखे बंद हो जाते हैं। ज़्यादा समय के लिए चली जाती है तो इन्वर्टर भी बोल जाता है, तो पूरा घर अंधेरा हो जाता है। सारी समस्या हैं। उसकी नई जनरेशन के साथ देखेंगे, कोई भी कंप्यूटर से लेकर सारी समस्या सब बिजली पर डिपेंड होगी। अब जैसे इलेक्ट्रिक वाहन चलने लगे, ये भी रिचार्ज नहीं हो सकते, ये रिक्शा रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, हमारी बाइक है इलेक्ट्रिक बाइक, वो रिचार्ज नहीं हो पाएगी। ये सारी समस्या है। तो ये कैसे सही हो सकती हैं? कंटिन्यू बिजली आने से 24 आवर बिजली आएगी तो कोई समस्या नहीं होगी। थैंक यू। आपके हिसाब से कानपुर में बिजली की वजह से क्या समस्याएं हैं? बिजली की वजह से समस्या ये है कि अस्पतालों में इलेक्ट्रिसिटी की ना आने से MRI, CT, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड ये बाधित होता है, और घरों में लाइट ना आने से उसमें जो है AC नहीं चल पाती है, तो सोने की समस्या होती है। दिन में काम करता है, रात में अगर नहीं होता है तो कैसे सोएगा, नहीं सो पाता है। इसलिए जो है इसमें समस्या आ जाती है सोने के लिए। ये कैसे सही हो सकता है? उसमें सरकार को जो है वो करना चाहिए कि सरकार जो है इस तरफ ध्यान दे कि लाइट अगर नहीं आ रही है तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। So here were some interviews of the people which faced problems due to electricity. And as of my knowledge, India faced several challenges and issues related to electricity. Here are some key problems related to electricity in India. First comes power shortages. India has historically experienced power shortages, especially in rural and remote areas. While the government has made efforts to increase electricity generation, distribution, and access, supply still falls short of demand in some regions. Second comes uneven distribution. The distribution of electricity is not uniform across the country. While urban areas generally have better access to reliable electricity, rural areas and often face erratic supply and voltage fluctuations. And the next comes is aging infrastructure. Much of India's power infrastructure is outdated and in need of significant modernization and upgrades. This includes power plants, transmission lines, and distribution networks. And then comes electricity. Number 4 comes electricity theft. Electricity theft is a significant issue in many parts of India. Illegal connections and lampering with meters result in revenue losses for power distribution companies. And the fifth comes is environmental concerns. India's heavy reliance on coal for electricity generation has raised environmental concerns, including all air pollution and greenhouse gas emissions. Transitioning into clean and more sustainable energy sources is a challenge. So now we'll talk about improving electricity problems in India. So improving the electricity situation in India is a complex and faceted challenge that requires a combination of policy measures, infrastructure development, and public and private sector participation. Here are some strategies that can help improve the electricity situation in India. Number 1 comes invest in infrastructure development. Upgrade and modernize power generation plants, transmission lines, and distribution networks to reduce losses and improve efficiency. Implement smart grid technologies to enhance grid reliability and reduce power theft. The second comes diversity energy sources, which is invest in a diverse mix of energy sources, including renewable energy, that is solar, wind, hydro, and nuclear power, and cleaner fossil fuel technologies to reduce carbon emissions, and to promote distributed energy generation through rooftop solar panels and decentralized renewable energy systems. The third comes is improved distribution company finances.
that is address financial viability issues of discoms by reducing transmission and distribution and losses, improving billing and collection efficiency, and reducing power theft. The next comes is promote renewable energy. Set ambition targets for renewable energy capacity addition and provide incentives for renewable energy projects. Simplify regulations and approvals for renewable energy installations. And the last but not least is enhance energy efficiency. To promote energy efficient technologies and practices in industries, commercial buildings, and residential areas. And to implement energy efficiency labeling and standards for appliances and equipments. And the government should look about problems of people which they are facing due to electricity. Thank you.